Right. Today the G20 finished and we had some terrific outcomes. So we'll have an update on that first. The detailed analysis on G20 हम 13 तारीख को करेंगे with our ex-ambassador to the African Union, Mr. Gurjeet Singh, जो पहले भी हमारे चैनल में आ चुके हैं. We will go into the intricacies of the G20, क्या हुआ नहीं हुआ वगैरह 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 in great detail. But today I'm going to focus on the immediate outcomes, क्या है, what people are talking, क्योंकि बहुत उत्साह है in the environment that India pulled off something. And India did pull off something because after Xi Jinping's snub, everyone thought that things might not go India's way and India might find it difficult. But that didn't happen. Let's look at the main issues. African Union admitted to G20. Consensus achieved on Ukraine war, which people thought would not be achieved. It pleased everyone. It pleased West. It pleased Russia. It pleased China, of course. It didn't matter, and everyone. There was a full consensus on the Delhi declaration. What is important इस Delhi declaration के बारे में? ये आज दूसरा दिन है. नॉर्मली ये जितने भी ऐसे होते हैं वो लास्ट मिनट तक कहते जाते हैं वो डिक्लेयर हुआ नहीं हुआ, जॉइंट स्टेटमेंट हुआ नहीं हुआ और लास्ट मिनट में कुछ परिणाम आता है. यहाँ तो कल ही ये दिल्ली डिक्लेरेशन हो गया सबका और उसके बाद तो सिर्फ उल्लास था. Right, everyone was happy in going through the motions of finishing everything. Two things which were important is the Global Biofuels Alliance, which goes towards the green earth system, and the digital public infrastructure. ये digital public infrastructure के बारे में थोड़े और विस्तार में I'll speak because ये इसमें जो है ना मेरे हिसाब से ये छुपा रुस्तम है. Then our Prime Minister had bilaterals with all major countries, and then a great thing which happened was the India, Middle East, Europe economic corridor, which has been announced. It's not part of the G20, but announced हो गया. ओके, इससे पहले कि मैं आगे चलूं और बात करूं, मैं ये पहले पॉइंट के ऊपर मैं दोबारा बात करना चाहता हूं. वेरी इंपॉर्टेंट. अफ्रीकन यूनियन एडमिटेड टू G20. ओके, ये सोचा जा रहा था कि अफ्रीका विल बी द प्लेस ऑफ competition between India and China. Fine. Then everyone thought जब ब्रिक्स में, देखिए ब्रिक्स में क्या था, that Africa, a lot of African nations wanted to join BRICS, हमने उनको रोक लगा दिया. Then 6 new nations were admitted into BRICS. सबने सोचा कि भाई इससे इंडिया का हार हो गया, कि ब्रिक्स का एक्सपेंशन हो गया. Why was this thought in the air? This thought was in the air because BRICS, Shanghai Cooperation Organization, and ASEAN were the three pillars, and with the underpinning of the BRI, were supposed to usher in a Sino-centric world order. ब्रिक्स का प्लेटफॉर्म वाज इम्पोर्टेंट बिकॉज उसमें जितने अफ्रीका देश हैं वो आना चाहते थे और ये सोचा जा रहा था कि चाइना की तरफ सब झुक जाएंगे. ठीक, तो साइनो सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर का आकार नजर आ रहा. पर आज क्या हुआ इसके साथ, अब देखिए G20 जो दुनिया के सबसे अमीर देश है. G20 का मतलब सिर्फ दुनिया के अमीर देश ही नहीं है, इसमें यूरोपियन यूनियन है जिसमें तकरीबन पूरा यूरोप है, राइट. उसके साथ 55 अफ्रीकन यूनियन नेशंस आके बैठ गए. इसका मतलब G20 अभी अगले बार से ये G21 होगा. ये एक्चुअली G21 नहीं होगा, ये तकरीबन 100 देश होंगे. 20 देश, 19 देश यूरोपियन यूनियन जिसमें 15-16 देश हैं और 55 कंट्रीज ऑफ अफ्रीकन यूनियन. So overnight we have cut the
ground under China and BRICS. ब्रिक्स में ये प्लान है, देखिए प्लान है कि ब्रिक्स में रोक लगाओ, ब्लॉक लगाओ और इधर ऑफेंसिव करो. शांघाई कॉर्पोरेशन में तो ब्लॉक लगा ही दिया क्योंकि वर्चुअल बना दिया उसको. So there is this is the major victory for India, and everyone is talking about it. There's no doubt. People thought without China this BRICS won't be great, without Russia BRICS won't be great. But look at Lavrov, he was saying, "Oh, I'm very happy with the Delhi declaration," and which actually we have helped Russia out. Okay, we'll talk of Xi Jinping. उसके बारे में बात करेंगे. वो तो he is like little Jack on a sat in a corner sucking his thumb dry. बस वो और कुछ नहीं किया उसने. Okay, digital public infrastructure. The magic of this, if it happens, because I read it in a tweet, I didn't see the declaration. वो थोड़ा लंबा चौड़ा है, वो आराम से पढ़ेंगे. इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है the one new conversation is around getting consensus around building a safe, secure, trusted, accountable, and inclusive digital public infrastructure through a three-part action plan. First, declaration welcomes the creation of the framework of DPI. ये जो DPI है, it will be on the generally it will be shared on the basis of UPI. Second, it welcomes India's plan. क्यों ये इंडिया का प्लान है ये? To build and maintain a global digital public infrastructure repository. So that means you hold the whole story, which means a lot of trust in India, which means that your architecture will be used. Why? Because you are trusted everywhere. एक, आपके ऊपर विश्वास है. दूसरा, हमारा जो यूपीआई सिस्टम है ये इतना डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है कि बाकी उसके अगले नंबर 2, 3 और 4 देशों को जोड़ दीजिए, उसके डबल है हमारा ट्रांजैक्शंस. चाइना तो कहीं नहीं है. ओके, a virtual repository of DPI voluntarily shared by G20 members and beyond. This again is inclusive and expansive. And after delivering free COVID vaccines to 100 countries, this could be India's second large scale global public good and a step towards meeting its Vasudhaiva Kutumbakam goals. That's the importance. So, this is the platform which will now transform the UPI into DPI. And the day this happens, आपका जो सब कुछ network and influence फैलेगा. You are going to be the global repository of all the data. Not China, not even USA, India. This is ये मेरे ख्याल में ये छुपा रुस्तम है ये पूरा कहानी में. And there is a diamond which is hidden. ये आगे जाके ये इसका काम आएगा. Okay, let's look at the other things. This is what the African Union, chairperson says from Comoros. ये अभी आधा घंटे पहले ये न्यूज में निकला और मैं लेके आया हूँ. India is world's 5th superpower ahead of China now. African Union chairperson Asomani. Right? What is he says? President of the Union of Comoros and chairperson of the African Union, right? Azael Asomani said as a 5th superpower in the world. He's already made us a superpower. There was enough room for India and Africa. So you are on a pig's back. ये एक मौका है हमारे लिए. Okay? What did President Biden tweet out? Again, very important. The tweet came from him. I'm proud to announce that the US, India, Saudi Arabia, UAE, France, Germany, Italy, and EU finalized a historic agreement for a new India, Middle East, Europe economic corridor.
This project is more than just laying tracks. This is a game changing regional investment. Why is this important? I mean, we'll just see next, right? ये मैप है. इसमें कास्ट, I mean, it's very clear that this line will go right up to Europe, Greece, and beyond. The Gulf and Saudis are playing their game. They are hedging against China. उनको पता है चाइना क्या है. अगर आज मैंने ये गल्फ का जो सऊदी का जो डेलीगेट है उसको बात करते हुए देखा और बड़ा क्लियर है कि वो इंडिया की तरफ झुक रहे हैं. वो चाइना की तरफ भी झुकेंगे, इसमें डाउट डाउट नहीं है. पर ये जो कनेक्टिविटी है इस इलाके में सीपीसी का जितना भी इन्फ्लुएंस है बंद कर देगा. क्योंकि व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? सीपीसी इज बाय वन कंट्री. हियर इट इज यूरोप, EU, USA, India, Israel, and Middle East. So everyone is involved. So this will outflank the CPC completely if it comes through. Why I said if it comes through? Because these things have a habit of big talk and going away. For example, the international north-south corridor was to come from India to Iran, Bandar Abbas, go further through Central Asia and connect the north. वो हुआ ही नहीं. But इसमें ना आना का it's better. Why? Because this is going through all strategic partners, a set of strategic partners. Israel, India, I2U2, Saudi Arabia, everyone are strategic partners to each other. USA, India, Saudi Arabia, UAE, Israel are all strategic partners to each other. Europe will just jump it and it will go. When this happens, influence of CPC will go down. Second, the moment this corridor comes in, the protection of this corridor becomes important. Economic corridor है, railway track, road, जो भी है, which means necessarily either US or Indian forces will be there around the Gulf of Aden, which means the Chinese base at Gwadar and its control over Djibouti will be tightened. कनेक्शंस देखिए, इसका जियो स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस. पाकिस्तान इन अ कॉर्नर, बैठो चुप. और पाकिस्तान में रिएक्शंस अभी से आ रहे हैं, वो क्या है, बड़ी है, नहीं है, G20 कुछ नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह. ठीक. तो the implications of this Delhi declarations are huge, and all these we'll discuss in detail. Okay. But more importantly, reaction from China. What's the reaction from China? थोड़ा नजदीक देखेंगे. दो ट्वीट हैं ये. ओके. एक किसी ने लिखा है, the recent bootlicking the West has been doing for India is pretty hilarious. This G20 declaration is as vanilla as it can be, with all the usual talking points. War was only mentioned 5 times and Russia wasn't even named with respect to the war. So why are the Western shills so giddy? तो ये ट्वीट में ये बोल रहे हैं कि भाई इंडिया को सब चाट रहे हैं. अच्छी बात है, चाटने दो. क्यों? चाइना ही एक इकलौता देश है जो चाटने लायक है. चाइना आजकल एक ही देश, इकलौता देश है जिसको किक लगाने के लायक है. और ग्लोबल टाइम्स का देखिए, as the US advances in the Middle East, railway plan during the ongoing G20 summit over the weekend in India, Chinese experts expressed doubts about its credibility and feasibility, as it is not the first time that Washington has initiated pledges for other countries. Fine, I'm okay with it. But Jalan, they started, already bad mouthing us. These two immediate reactions tell you that the Chinese are taking it seriously. उनको एक तप्पड़ है मुंह पे. किसने लगाया? सऊदी ने लगाया, यूएई ने लगा दिया.
ये जी जिनपिंग वाज, ये सब जंप मार रहे थे, ईरान और सऊदी का डील करा दिया और उसका डिप्लोमेसी है, वो छा जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा. ओके, दिस इज फ्रॉम साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट इवनिंग. G20 समिट, यूएस इंडिया एंड अलाइज. और अभी यूएस इंडिया और अलाइज देख लीजिए, तो इंडिया का नंबर 2 पोजीशन है इसमें यूएस के बाद. Unveil initiatives as Xi and Putin keep distance. तो ओके. और किसी ने पूछा बाइडेन से, भाई उसका क्या असर होगा. उसने, बाइडेन साहब ने बोल दिया कि हाँ, वो अगर होते तो अच्छा होता, अगर नहीं होते तो चलेगा, हम ये समिट तो अच्छा चल रहा है. तो इसको इग्नोर किया गया है. एंड इंडिया ensured that Russian interests were taken care of. So diplomatically we have come out very well. इसमें दो राय नहीं है. And this presidency has lifted India to a different level. When someone says you're a superpower, और कोई और बोल रहा है, हम खुद नहीं बोल रहे हैं, right? And this will take us to the next level of getting a UNSC seat also, permanent. I mean, one has to be patient in all this. Okay, this is something which I read. I thought I'll share with you. While Xi Jinping and Putin are both staying at home, suffering from bad emperor syndrome and Stone Age emotions, the world from Africa to outer space is about to solve its biggest challenge of globalization, lack of consensus. And this is what consensus, एक तरफा सोच, एक दृष्टिकोण, सबको साथ लाना, सबके साथ सबका विकास, वसुदैव कुटुंबकम, वन अर्थ, ये सब कंसेंसस, ये एक बड़ा जीत है. और ये जो हुआ है, ये इंडिया का जीत है. मेरे को डाउट नहीं है, बाकियों को डाउट हो सकता है. एक ये भी मैंने पढ़ा, इट वाज वेरी नाइस, आई थॉट लेट मी दिस थिंग. ये जो दिल्ली डिक्लेरेशन जो हमने मैनिपुलेट, आई वुड से मैनिपुलेट नहीं किया, जो हमने स्टेयर किया है, किसी ने लिखा है वेस्ट इज पिस्ड ऑफ फॉर नॉट कंडेमिंग रशिया बट दे स्टिल एग्रीड. मान लिया उन्होंने. चाइना इज नॉट हैप्पी अबाउट टेररिज्म बट दे स्टिल एग्रीड, क्योंकि टेररिज्म को हमने लगा दिया. और ये भी लगा दिया कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रेस्पेक्ट करना है. डिक्लेरेशन में टेरिटोरियल इंटीग्रिटी डिक्लेयर रेस्पेक्ट करना है. वो एक संकेत चाइना को है कि रेस्पेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ अदर नेशंस, जो इन्होंने मैप भी जारी किया था. संकेत उसको है, उसको पता है. रशिया इज नॉट हैप्पी अबाउट मेंशनिंग यूक्रेन बट दे स्टिल एग्रीड. सबको अपना 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 हिस्सा दिया और सबको सहमति में ले आए. ये है जीत, सहमति. ओके, नेक्स्ट. ये लोग सब बोल रहे थे कि हैज जी जिनपिंग स्नब्ड इंडिया और यूएस से. क्या ये स्नब हुआ या बैकफायर हो गया? ये मेरे ख्याल में तो बैकफायर हो गया. इंडिया का हैज एमर्ज्ड एज अ बैलेंसिंग पावर. इसके बारे में थोड़ा बात और करूंगा. एक चीज है इसमें क्लियर है, जी जिनपिंग नहीं आया. इज जी जिनपिंग लुकिंग एट एन ऑल्टरनेटिव ग्लोबल ऑर्डर अभी भी? क्यों? अभी इसने शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में इसका बोलबाला था. ब्रिक्स में इसने जो कुछ हासिल किया. अब ये तीसरा बेल्ट एंड रोड फोरम जारी करने वाला है. तो ये सोचना कि चाइना चुप रहेगा, ये तो बेवकूफी है. उसको वो चाल चलाएगा, कुछ ना कुछ चाल चलेगा. ये तो बाहर डिप्लोमेसी करेगा. ये जो नजदीक वाले नेशन है, एशियन नेशंस और उसके नेबर्स हैं, उसके अगेंस्ट मिलिट्री मसल इस्तेमाल करेगा या कुछ करेगा. देखेंगे क्या करेगा. राइट. ये खेल नया जो शुरू होगा इसके बाद देखने वाली बात है. क्यों नहीं आया जी जिनपिंग? ये क्या, वाज इट टू स्नब इंडिया और
यूएसए, क्या ये उसका सोच उतारता कि यहां आने से इसको कुछ फायदा नहीं होगा? क्या इज ही लुकिंग एट एन ऑल्टरनेट साइनोसेंट्रिक सिस्टम कि यहाँ तो मेरा चलेगा नहीं और देख लूं, जैसे मैंने बताया, थ्रू शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिक्स एंड एशियन एंड बीआरआई, और बीआरआई फोरम में अनवील करेगा, क्योंकि ऑलरेडी ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव वगैरह के बारे में बात कर ही रहा। क्या इसका डोमेस्टिक इश्यूज, अंदरूनी प्रॉब्लम्स चाइना के अंदर, इसके अर्थव्यवस्था हो या अशांति हो या अनएम्प्लॉयमेंट हो, कि उसकी वजह से नहीं आया? क्या इसका हेल्थ ठीक नहीं है, क्या है पता नहीं, क्योंकि कभी पता नहीं चलेगा, राइट? किसी ने यहाँ लिखा चाइना वाज नॉट अ फ्रेंड ऑफ इंडिया, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ये चीज जो चाइना चाइना का रवैया इंडिया के बारे में क्या होगा, मैं एक पूरा प्रोग्राम करूंगा, क्योंकि उसका मैं आई गॉट सम गुड मटेरियल which I want to share with you of their think tanks. We'll see that down the week. Next week I'll do it, not this week, not coming week, after that. Coming week is packed with a lot of other things. Okay, ये मैंने बैलेंस ऑफ पावर मैट्रिक्स में जब डिस्कशन किया था, व्हेन द इंडो यूएस डील वाज हैपनिंग, उस वक्त आई शोड दिस कार्टून, एंड दिस इज अ कार्टून बाय अ चाइनीज। वो खुद बिलीव करते हैं कि दैट वी आर वन ऑफ द मेजर प्लेयर्स इन द ग्लोब। तो ये है उसका, ये देखिए, ये जो भी हमने किया है, उस वक्त भी मैंने ये मैट्रिक्स दिखाया था, where USA, I've said, is a dominant power, Russia is a weakened power, China is an aspiring power in decline. ये मैं 3 महीने पहले बोल चुका हूं, आज लोग बोल रहे हैं, देख लीजिए जो हमारा विश्लेषण सही निकला कि नहीं। और मैंने 3 महीने पहले बताया कि इट्स अ बैलेंसिंग पावर, और उसका वीडियो भी मैं जारी करूंगा। और ये भी मैंने जारी बताया कि इंडिया का राइज नो वन कैन स्टॉप। ये मैं एक वीडियो अलग एडिट टू जोड़ के मैं करूंगा। In this balance of power, India is important. What has happened in the Delhi Declaration is we have been able to balance everyone's interests out. सबका सबको साथ लेके आए। इससे पहले हम स्विंग पावर थे, जहां जिस तरह झुकते थे वो पलटा भारी होता था। अभी हम स्विंग नहीं कर रहे हैं, हम अपना बोल रहे हैं, व्हाट इज आवर idea, and we are balancing everyone and bringing everyone to the table. That's what has happened in G20. People have started recognizing us as a balancing power. Yeah, the African Union might have said we are a superpower. That's a different thing. सर पे नहीं जाना चाहिए. Okay, so this is all about the G20 for today. More on